recorded. So we have started chapter number 10, wave optics, and Huygens was the first person to coin the theory of wave theory about the light. Before that, Newton gave the corpuscles theory. Light is made up of the small particles called corpuscles. And later on, Huygens was the contemporary to that. He gave the wave theory, and later on Maxwell gave the electromagnetic wave theory of the light. Light is wave, and it is made up of electrical and magnetic fields or energies, we can say. So, and then Thomas Young proved the wave nature of light by his well-known double slit experiment. Now, Huygens first gave the concept of wavefront. Wavefront we have seen when we drop the stone in the still water, we get the circular concentric rings. These rings are nothing but a wavefront, which are defined as locus of all the particles of medium which are vibrating in same phase, or we can say surface of constant phase. Surface obtained by joining the particles of medium which are in same phase. So light may be ऐसा wavefront बनते. It depends upon the type of the source. Light wavefront of the light can be of three types. अगर वो spherical wavefront है, I mean point source है तो spherical wavefront बनेगा, because it will cover equal distances in equal interval of time. And अगर हमने उनको join किया, we get the spherical surface around the source which will be at center. और अगर linear source है, we get the cylindrical wavefront. And if source is far away, it can be spherical, it can be cylindrical, but it is far away, then we get the plane wavefront. Plane wavefront is nothing but a very small surface of the very huge wavefront. बहुत huge wavefront होगा, उसकी छोटी सी surface, it will look like a plane surface. It is obtained when source is far away. For example, wavefront on the earth due to sun. In fact, plane wavefront is a part of the very huge spherical or cylindrical wavefront, and in this rays are parallel to each other. Parallel rays will make the plane wavefront. And how do we define the light rays? It is perpendicular drawn on the wavefront in the direction of motion of light. यहाँ पे perpendicular draw करेंगे. That is nothing but a light ray. And wave speed is a speed with which wavefront moves in the medium, particular medium. Okay. And if I ask you what is the phase difference between any 2 points on given wavefront, it will be 0. No phase difference, because all the points are vibrating in same phase. है ना? एक साथ ऊपर या नीचे या outward या inward जाते, so they don't have the phase difference. They are having a 0 phase difference. Because definition ही वही है. Locus of the particles vibrating in same phase. तो same phase में है, तो phase difference is 0. एक साथ they are moving. All right. तो जैसे क्वेश्चन है, what is the shape of the wavefront in each of the following cases? Light diverging from the point source. ऐसे diverging, तो spherical wavefront बनेंगे ऐसे. Light emerging out of the convex lens when the point source is placed at focal point.
यहाँ से पैरेलल रेज हो जाएंगे और पैरेलल रेज के बीच में प्लेन वेव फ्रंट बनता है. Other side will get the plane wave front. The portion of wavefront of light from the distant star intercepted on the Earth by the Earth will also be plane wavefront. Plane wavefront when the source is far away, then only wavefront. But if source is nearby, which is on the focal point of the any convex lens, then also we get the plane wavefront. It means in the lab also we can get it. We don't have to keep the source at infinity. Okay. Plane wavefront can be obtained being in the lab itself. तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोकल पॉइंट पर रखना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा, उसकी एक तरफ फोकल पॉइंट पर पॉइंट सोर्स रख दीजिए, तो वन साइड वी गेट द स्फेरिकल वेव फ्रंट, अदर साइड वी गेट द प्लेन वेव फ्रंट. गॉट इट? इस तरफ हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा. Are you there? Yes, sir. Okay, moving on to the next question. क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? और if plane wave front is passed through the prism or convex lens, then it will change its shape because the speed of light in the denser medium is less. ये वाला जो point है, it is covering less distance in the denser medium, it will be going ahead, and this point is covering more distance in the denser medium, it will be lagging behind. तो ये incline हो जाएगा ऐसा. ऊपर वाला पार्ट जो है कम देर तक डेंसर मीडियम में रहता है, ऐसे इसमें भी सेंटर वाला पार्ट जो ज्यादा देर तक रहेगा तो पीछे छूटेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम इज लेस, यहाँ पे पीछे छूटेगा, ये वाला ऊपर थिन होता है लेस, तो ये आगे निकल जाएगा, बेंड लाइक दिस. जैसे फर्स्ट सरफेस दिख रही है ना वैसा आ रहा है, इसमें फर्स्ट सरफेस ऐसे, और रिफ्लेक्शन होने के बाद इसमें ये वाले पॉइंट और ये वाला प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसे जाके हिट करेगा, ये तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये थोड़ा सा आगे जाके बाद में रिफ्लेक्ट होगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाएगा, ये आगे आ जाएंगे, ये थोड़े पीछे रहेंगे. यस सर. कॉनकेव में ऐसा हो जाएगा बिकॉज ये बीच में थिन है, बीच वाला पॉइंट आगे निकल जाएगा. Huygens principle is the next one. Huygens ने प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर उससे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस एक्सप्लेन किए. तो अगर हमें किसी पॉइंट पर हमें पर्टिकुलर वेव फ्रंट का शेप पता है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन एंड शेप ऑफ द वेव फ्रंट. फॉर एग्जांपल ये कोई गिवन t इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट है लाइक दिस, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स है, ऑल द पॉइंट्स हियर एंड हियर विल एक्ट एज ए
fresh source of disturbance and a wave originating or emanating from these points are called secondary wavelets. जो waves हैं secondary wavelets हैं. Which move with the speed of light in the medium, and if we draw the common tangent to these wavelets, we obtain the new wavefront at later time. Suppose particular time t पर हमें निकालना है, wavefront कहाँ पहुंच गया, तो कितने रेडियस का ड्रॉ करेंगे, r will be equal to c into tau कुछ t is equal to tau पे ड्रॉ करना है, तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतने रेडियस का हम आर्क लगा के we can just find out the position of wavefront at the later time. That is called secondary wave. I mean, this can be called primary wavefront. This at the later stage that can be called secondary wavefront. क्या दो पॉइंट बताया इसने कि any point on given wavefront will act as a fresh source of disturbance, sending the disturbance in forward direction in the form of secondary wavelets, and common tangent to these wavelets will give you the wavefront at later time. That's how it moves. And he took the help of this to explain the law of reflection and refraction. So that's how you can state, you can read your textbook also, almost same definition you find, or you can write the definition from that your textbook. Now, using this law of reflection and refraction देखते हैं. Questions are generally asked, what is the Huygens principle? And using this, prove the law of reflection. Or we can say it wave theory. It is nothing but a wave theory. According to wave theory, you have to prove the law of reflection. ये reflecting surface है देखो. And AB is the incident wavefront. Point A is just hitting at any moment, it is hitting the reflecting surface at point A, but B is lagging behind. So equal to these are the rays. So BC distance का हमने यहाँ पर इधर आर्क ड्रॉ किया. AE is equal to BC distance, and joining C to E gives us ये वाला जो है reflected wavefront. ठीक है. And because whatever the time it takes from B to C, same time में it will cover same distance this side, because both side the same side में है, same medium is there, so time taken यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम उतने टाइम में ये यहाँ पहुंच जाएगा. So what we see here, ये एंगल 90 रहेगा because रेज एंड वेवफ्रंट के बीच में एंगल 90 रहता है. इधर से भी रे है और ये वेवफ्रंट है. And if this is the angle of incidence, तो ये भी angle of I होता है, because this will also be I, and this is I, this is also I. ये 90 minus 1 minute. How this will be I? यहाँ से I है और ये भी आपका एंगल I है.
है ना, and angle of this is the incident wavefront, ठीक है। तो these angle they prove करना एक्चुअली हमें यहाँ पर, this will be I and this will be R, both are equal, we have to prove it, है ना। तो देखो यहाँ से देखो ये 90 है, ये total is 90, this is I, this will be 90 minus I, and this is normal drawn here, अगर ये 90 minus I है तो ये I हो जाएगा, getting or not। यहाँ से देखो this is 90, if this is I तो this will be 90 minus I, और ये नॉर्मल है फिर से, ऐसे ये भी R आएगा इधर का भी, ये R है, this will be 90 minus R, and again total is 90, so this will be R. So these I is equal to R, we have to prove equal. So these are the two triangles, they will be similar. How they are similar? एक तो एंगल 90 हो गया, दूसरा जो है ये साइड AE is equal to BC and AC is common. So 3 points are common, they are similar, therefore angles, these angles I will be equal to R. Clear? हमने AB incident wavefront लिया, the point B covers whatever time it takes to reach to C. In that time, the wavelet at A will be reflected and it will also cover same distance. So BC is equal to A का arc लगाया और इसको join कर दिया ना. So we get the reflected wavefront. If this is I, this will also be I. If this is R, this will also be R. And these two triangles are similar because this angle and this angle 90 degree, और ये side equal, और ये common side है. So their angles, these angles will be also be equal. That's how you have to prove it. ठीक है. So these three points you have to remember. इसको explain भी करना है already, notes में हम लोगों ने लिखा था ये. Sometimes it is asked one of the derivation, either reflection or refraction. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव करेंगे देखो, इसमें दिस इज द इंसिडेंट वेवफ्रंट, स्पीड इन दिस मीडियम इज v1, तो ये डिस्टेंस b, लेट टाइम taken from B to C is tau, distance BC will be speed into time, and in same time interval distance AE, it will cover distance AE, which will be equal to V2 into tau. Speed is V2 here, which is less in fact. So जितना डिस्टेंस हुआ V2 into tau उतने का आर्क लगा देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे जैसे. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. ठीक है. इसमें साइन आई क्या होगा? Sin I will be opposite upon hypotenuse, और sin R, ये एंगल R होगा तो ये R है, ये 90 माइनस R हो जाएगा, ये 90 तो ये R हो जाएगा जैसे,
or sin r will be opposite, that is AE upon hypotenuse. तो sin i by sin r की वैल्यू पुट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, sin i AC AC कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, और tau tau भी कैंसिल हो जाएगा, तो V1 by V2 बचेगा, है ना, and V1 by V2 is N2 by N1, that is N21, है ना, so it comes sin i by sin r is equal to N21, which is Snell's law, a law of refraction, है ना. Got it? तो दोनों में से एक can be R. इसमें cos I कितना हो जाएगा, adjacent upon hypotenuse, cos R will be adjacent upon hypotenuse. इससे हमें width of the cos के फार्मूले से width of the wavefront we can get it. All right. This question you can do it. Wavelength is given in air. What are the wavelength, frequency, and speed of reflected and refracted light? Frequency तो change होती नहीं है, whether it is reflected or refracted. तो C is equal to F lambda से frequency पहले निकाल लेंगे. Frequency remains same वाला पॉइंट यूज करके हम सेकेंड मीडियम में निकाल सकते हैं बाकी पैरामीटर. वेवलेंथ निकालना है सेकेंड मीडियम में, वेवलेंथ इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज. और अगर वेलोसिटी निकालनी है सेकेंड मीडियम में तो सी को वेवलेंथ एंड वेलोसिटी निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं. फ्रीक्वेंसी के लिए किसी से भी डिवाइड नहीं करते, इट रिमेन सेम. बट फर्स्ट केस में आपको सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. तो यू शुड नो स्पीड ऑफ light in vacuum or air is 3 into 10 to the power 8. That sometimes may be given, may not be given. Sometimes you have to remember this. ठीक है. Superposition principle, when two waves are interacting in the medium, then their resultant displacement is the vector sum of individual. है ना, यहाँ पर दोनों सेम फेज में है, तो it will be added up, called constructive superposition. यहाँ पर opposite vibration से तो subtraction हो जाएगा and माइनस हो जाएगा. Afterwards they will reappear also. ये जो wave है ये वाली, it will continue to move this side, and this one ये वाली, it will continue to move this side. They will reappear and
again go away as they are moving originally. So here it is called destructive superposition. So superposition principle is nothing but a vector law of vector sum of two what is called individual displacement of wave moving in the medium. वेक्टर से उनको देखना है, यहाँ पर 0 डिग्री हो रहा है तो डायरेक्ट ऐड हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री है तो इनडायरेक्ट माइनस हो गया डायरेक्टली, बट एंगल कैन बी अदर देन दैट, है ना. तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विल बी यूज्ड. एंड कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशन क्या है बोलिए? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस? डेफिनेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? Do you remember that? How do we define the coherent sources? What is the condition for sources to be coherent? Coherent sources are one in which phase difference between two waves at any point doesn't change at all. It remains constant. जो भी phase difference है, it doesn't change with respect to time. हमेशा जो है वही रहेगा. So this can be only true when the sources are obtained from single source. एक source से obtain करते हैं तभी वो constant phase difference maintain कर सकते हैं. Like slit, सिंगल सोर्स लिया, उसमें उसके सामने हमने एक कार्डबोर्ड रख के सिंगल स्लिट बनाया, फिर दूसरा उसके सामने, फिर 2 स्लिट, डायरेक्टली यहाँ भी रख दिया ना सोर्स, तो डजंट मैटर. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ऑटोमेटिकली सिंस दे आर obtained from the single source of light, ऑटोमेटिकली उनकी frequency wavelength will also be equal. But main condition is phase difference at any point should be constant. Getting these points? This point, are you there or not? Yes, sir. we got. Okay. So main condition constant phase की है, constant phase difference. जहां पर interact होती है उस पॉइंट की बात हो रही है. Otherwise we cannot say कि we cannot compare. यहाँ से जो यहाँ से इसका वेव निकल रही है, ये वेव निकल रही, तो they are, there is no use of saying कि भाई दोनों का phase same है. They are here, one is here, but when they are meeting, at that point we can say what is the phase difference between them. जो भी है, it is not changing with respect to time, है ना. जब वो meet करती हैं, then only we can say क्या phase difference है. Intensity is nothing but related to energy only, but it is not, it is related to energy only, energy of wave per unit time per unit area. किसी पॉइंट से वेव की कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है और पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, क्रॉस हो रही है. दैट इज इंटेंसिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, है ना. ज्यादा एम्पलीट्यूड होंगे तो ज्यादा लाउडर साउंड होगी या ज्यादा लाइट होगी. और फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर.
स्क्वायर के, एंड विड्थ स्लिट विड्थ इसमें स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इसमें width of the intensity is directly proportional to slit width. Slit width दी है तो इंटेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं I1 by R2. एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड दिए है तो इंटेंसिटी का रेशियो A1 स्क्वायर by A2 स्क्वायर आ जाएगा. Because they are coming from same source, frequency will get cancelled. Frequency को mention नहीं करते because coherent sources हैं. We don't mention the frequency. वो कैंसिल हो जाती है रेशियो में. I1 by R2 will be A1 by A2. Amplitudes can be managed. Different amplitudes can be by changing the what is called shape and size of the slits. Amplitudes can be managed different. Or in case of waves, we can see frequency can also be different. In case of sound sources and sound may be intensity. Sound may different source. They can be different sources can be there to have the constant phase difference always. Light is involving very small vibrations to produce the light. Therefore, the coherent sources can be obtained from single source of light. But sound के लिए हो सकता है identical sources हो और उसमें फिर frequency different हो सकती है. But generally we don't need the full formula. We leave our intensity and amplitude का ही relation. Light के लिए हमें this will be required and this also. Now relation between path difference and phase difference. Suppose यहाँ से जो light है, it is at point P, it is covering distance x1 और ये वाला x2, तो दोनों का जो difference है, ये extra distance कितना travel कर रही है x, ये point P से जितना distance s1 का है, उतना distance यहाँ से हमने mark कर लिया, तो extra distance is the path difference, that is x is x2 minus x1. Center of the screen पे path difference will be 0 because both will be covering equal distances. यहाँ पर x will be 0. Center में path difference between both the waves. And how it is related with the wave, with the wavelength, and with the phase difference. Phase difference के साथ कैसे related होता है? Why? Because okay, with the relation phase difference is equal to 2 pi by lambda into x, because for one wave distance is lambda and angle जो है 2 pi का रहता है उसमें, because source यहाँ पे कोई source produce कर रहा है wave को, complete oscillation करेगा, one oscillation is equivalent to 2 pi and it produce one wavelength, so 2 pi is equal to lambda is equal to 2 pi, and for 1 meter phase difference will be 2 pi by lambda. For x meter multiplied by x will be the phi will be the phase difference, like this. Unitary method से हम इन दोनों के बीच का path difference phase difference के बीच का relation निकाल सकते हैं. देखिए इसमें यहाँ पर जो डायमेंशन x की है वो लैम्डा की होगी, इनकी डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी और फाई की डायमेंशन बचेंगी इन टर्म्स ऑफ पाई एंड ऑल, इन टर्म्स ऑफ रेडियन. लेंथ की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी x एंड लैम्डा की, डायमेंशन भी बैलेंस है. तो ये फेज डिफरेंस इज गिवन, फेज डिफरेंस को लेकिन रेडियन में पुट करना है यहाँ पर, तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं. ये फॉर्मूला हमने इसको चेंज कर लिया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
आर यू रिमेंबर दिस मच ओनली, एंड इसी में वैल्यू चेंज पुट करो। और पाथ डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस से हमें इंटेंसिटी मिलती है, बिकॉज फेज डिफरेंस एंड इंटेंसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, दिस इज वेक्टर कॉस थीटा आता है ना वेक्टर एडिशन में, तो कॉस थीटा की जगह कॉस फाई लिखेंगे हम, फाई इज इक्वल टू थीटा। तो अगर हमें पाथ डिफरेंस पता है तो हमें फेज डिफरेंस पता रहता है, और पेज डिफरेंस के फार्मूले, पेज डिफरेंस इज इक्वल टू एंगल ओनली, तो वेक्टर एडिशन में एंगल आता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, और cos फाई विल राइट। तो फिर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाता है, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी मिल जाती है। तो ऑल थ्री आर इंटरकनेक्टेड है ना, पाथ डिफरेंस देन फेज डिफरेंस देन एम्पलीट्यूड देन इंटेंसिटी। We can see the formula in the subsequent classes, एम्पलीट्यूड का और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन YDSC we can see, ठीक है। That's all from my side.